So we are going to start with the CT protocol, creation. right? So click on this hammer and tools option and click on the protocol management. This is the list of GE protocols, These are the factory protocols. factory protocols. And from this option Drop down. you can see the user protocols. Here there are no protocols, and we are going to make. We are going to create. So two protocols I have already created, skull acer and brain acer. So the third one we'll go back to the GE protocol and let's create it for the parathyroid. So parathyroid, we can select this So one. these green are for the which can be used with a SPECT-CT. Exactly. So this green means if you select any protocol and click as a make as a hybrid, unmark hybrid, for example this one, mark as hybrid, and it will turn into green color. If here mark as hybrid and hybrid. Okay. So hybrid protocols will be only seen in the nuclear medicine console. Otherwise, in the nuclear medicine console you can go and see the CT, right? So only which is green in color here, only those protocols will appear there, right? So this one we will make for the, I made for the brain. Now next step is for the neck, right? And that is parathyroid or neck, we can rename it. So we'll copy it and go back to the user protocols and click here on the neck and then paste. This you can rename, let it be parathyroid, if you want to rename it, and then you can just type it. So you can write parathyroid CT. Okay. SPECT-CT should be. So जब study है ना, it's only CT, right? Because it's only CT protocol. Okay. Then edit. Edit में this start location, end location. Here is the rotation time, axial, healthcare and all. So let's keep 1 second. 1 second tube rotation. Okay. And this is start superior 200 to inferior 200. Slice thickness for the parathyroid you can keep 2.5. Okay. And this is the pitch 1.35. Let it be that only. And click OK. On neck MA we can keep around let's keep 180 because you want good quality, and acer you can put 30%. Acer is for the dose reduction and improving the CT image quality. So there will be a 30% dose reduction of 160. Okay. So how much can we keep? How much more we can? Can we not keep it 100% dose reduction or? No, so 100% will be very smooth. Okay. So maximum you can go to 50%. Okay. And maximum MA possible is 200. So if you keep it 0, it will go to 160. Okay. So 30% dose should be keep. Yeah, 30 or 30-40% you can keep dose reduction. So effective MA will become 110. Here kV is 140, right? That's if you make it 120, then it will go to 200. It's 200. For 200 में 30% reduction of the MA. So effective will be 140 DR at 120. But जब भी parathyroid करते हैं तो you have shoulder in the way. So for the shoulder region we keep 140. So if once you keep 140, it will become 160 instead of 200. And 30% reduction of then 110. So will this not degrade the image if we keep 30% dose reduction? So 30% dose reduction means you maintain the same image quality even at 30% low dose, because acer is not just reducing the
dose. Acer is a new algorithm, iterative reconstruction technique, which can give the same image quality at 30% less dose. That means you are not degrading the images, you are only reducing the MA and maintaining the image quality of equal to 160 MA. Because Even with Acer giving is 110 mA, it is equivalent to 160 mA. yes. So without Acer, if you do a 160 MA, with Acer you do at 110 MA, Both image will be quality will be equivalent. same. Yes, that one paper somebody can write on Acer technology. Like you do a CT scan, prospectively also you can do. You do a CT scan of 110 MA, apply the Acer of different level like 10%, 20%, up to 50%, and see the changes in the SNR or CNR, contrast, right? So that paper also you can, right? Nobody has done nuclear medicine. So if you can do and do some poster, this presentation publication like in February, NMPI is coming, right? So Okay. and then timing, voice lights is no, there is no auto voice in this. So this is already clicked no. So And breath hold will not be required, breath hold for this study is not required. but movements will not be there. So for this study, no movement, so no breath hold, because it's neck, no. It's neck is neck. Mein there won't be any movement. So it's better to keep breath hold so that we can avoid breath movements. Which movement? Breathing? Breathing movements. नहीं, but neck में कहाँ से breathing movement होगा? Lungs में होगा, abdomen में होगा. neck will not expand, no? Unless there is some physical movement of the head or neck. There won't be any significant movement is not there. Significant movement. Yes. Okay. So this can be saved now. Just click accept here. Now parathyroid is ready. Now we'll create a next CT, only next CT. For example, in thyroid, suppose thyroid SPECT-CT you are doing. So we'll keep one next CT that we can link with the iodine. That we can link with the thyroid SPECT, right? So go back to the G protocols and click on the neck so that you can see the neck protocol. Just click copy and go to make it hybrid. It is just a CT. Yes, so I'll paste it here and make it hybrid, right? And rename it. Rename it is neck CT. Okay, neck CT. Okay, then edit the parameters of this scan. Here MA is, this is scout, so emission will be first, then transmission. Let's keep let's delete the So 0 and 90. let's delete the scout. For the neck we need just a lateral one, so delete the first one. Okay, so just lateral scout is enough, and then no voice lights is already set. So this one is the CT series. This parameter will not change. Let's keep 1 second rotation. This one we can keep as S100 to I100 or S100 to I50. Anyway, whatever respect you are keeping, the same will copy here, irrespective of the location. If you are doing emission first, so whatever is there in the emission area, that same thing will automatically be copied here. So whatever is the currently value is irrespective of that. So 3.75. This is neck. Size thickness will be
1.25. Slice thickness, how much you want? 1.25 will be better. 2.5 is enough. 2.5 has gone 1.2. हाँ 1.25 चलो 1.25 रख दो डायरेक्ट. Okay, so interval you can reduce 0.625 so that you can further improve the image quality. Shorter is the interval, shorter is the slice. Like यहाँ पे slice 1.25 है. If you make it half, interval half, so there will be more overlap between the slices and you will get the better image, because if you are generating the thinner CT slices, there will be more noise. To reduce the noise, one way is to reduce the interval 50%. So the slice to slice there will be 50% overlap. If you keep 1.25 slice thickness and 1.25 interval, the slices will be next to next. And exposure itself is different. हाँ? हाँ. नहीं difference होगा ना dose पे. Dose बढ़े मतलब acquisition time will increase, dose will increase, but you have to get the better image quality also, no? Because neck shoulder is there, so lots of attenuation will be there. To overcome that streaks what you get here, the best way is to reduce the interval. So in this case it is a neck scan, so again you keep the 200 mA and 40% reduction, so it will become around 160, 120 effective mA 120. So there is a 40% dose reduction. Instead of 200 we are giving just 120. And auto eyes is already set, no? Okay. See the milligray, it is showing 12.13. If you multiply this with the tissue weighting factor, it will become around 1.2. So 1.2 millisievert on the neck. Understood? This is the milligray exposure. This is the exposure, and if you multiply this value with the tissue weighting factor, that is around 0.1. So 0.1 you multiply, it will become 1.2. Tissue weighting factor. Theoretical 0.04 maybe. Right. Average we take around 10% divided by 10. Whole body work. So this is again set. इसमें next series है. Equivalent dose millisecond count. So this is what which series it is? This one is the Scout and this is the CT. Okay. So 1 2 series are there. Now accept. Yes. So we are able to create 2 protocols. अभी हमारे पास देखो ब्रेन के प्रोटोकॉल हो गए. स्कल, अगर बोन स्कैन है, ये एरिया का बोन है तो यू विल टेक स्कल. लेकिन अगर कोई ट्रोडेट है या ईसीडी है जिसमें आपको कॉर्टिकल एरियाज देखने हैं ब्रेन के, तो ये वाला प्रोटोकॉल लेंगे आप ब्रेन. इसमें जो है बोनी एरियाज देखने के लिए, ये जो है सॉफ्ट टिश्यूज देखने के लिए, राइट. फिर नेक में ये पैराथायराइड के लिए हो गया जिसमें 140 है. क्यों? क्योंकि पैराथायराइड इधर नीचे भी हो सकता है. ये वाला आयोडीन जैसे पैराथायराइड इमेज के लिए आयोडीन 131 वगैरह के लिए हो गया, राइट. अभी नेक्स्ट है लंग्स. ओके, तो लंग्स जैसे आपने कभी समझो परफ्यूजन स्कैन किया या कोई HRCT वगैरह लेना है, तो यहाँ पे जी प्रोटोकॉल में जाकर के लंग्स पे क्लिक करेंगे तो यू विल सी ऑल द लंग प्रोटोकॉल्स. ओके, CT HRCT chest 25.6. तो यहाँ पे 2-3 HRCT के हैं, रूटीन है, ये कार्डियक का है और CTAC लो डोज है. कार्डियक का तो फैक्ट्री से ही सेट कर देंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं है. कार्डियक में तो आपको सिर्फ एटेन्यूएशन करेक्शन करना है. So we need to copy this and paste it there ना. हाँ, तो कार्डियक का तो डायरेक्ट फैक्ट्री में ही अटैच कर सकते हो, और इनफैक्ट वो ऑलरेडी अटैच्ड होगा. विल चेक इट. व्हाट आई वांट टू क्रिएट इज द HRCT फॉर चेस्ट.
below that. हाँ, The next one. The next one. ये वाला लेते हैं, ये सबसे बेस्ट इमेज देगा। 16Z बोलेंगे तो ये आई थिंक एक्सियल स्कैन होगा। तो कितना स्लैश है? हाँ 16 स्लाइस है। बट इमेज क्वालिटी हाँ इमेज क्वालिटी से लगता नहीं 16 स्लैश। इमेज क्वालिटी क्या, कंट्रास्ट, दिस इज डेडिकेटेड फॉर द न्यूक्लियर मेडिसिन। रेडियोलॉजी से कंपेयर मत करो। अभी एग्जाम्पल अभी दूंगा तो हंसोगे। ओके तो ओके लेट्स क्रिएट अ रूटीन चेस्ट। ओके कॉपी, बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन भी नहीं चाहिए, एंड क्लिक ऑन द चेस्ट देन पेस्ट हियर। उसमें फिल्टर लगता है। इसको लिखेंगे सीटी लंग या चेस्ट। CT lung, CT chest routine डाल देते हैं। हाँ अच्छा एच डी लिख दो। ओके सीटी चेस्ट एच डी। इसमें आपको अगर, क्योंकि ये जो सीटी करोगे ये आप फ्यूजन के लिए यूज कर रहे हो राइट, नॉट ए स्टैंड लोन, तो यहाँ पे ब्रेथ होल्ड नहीं करना है, लेट द पेशेंट ब्रीथ। क्योंकि रजिस्टर ब्रेथ होल्ड करेगा तो रजिस्टर नहीं होगा, मिस रजिस्ट्रेशन होगा। तो आपको यहाँ पे कोई भी स्टडी जो है, जो अगर स्पेक्ट के साथ कर रहे हो तो ब्रेथ होल्ड करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ अरे ठंडा है। 10 मिनट हो गए कब से आ रहे हैं मॉर्निंग से बैठ ओके ये 5 पे जाना था। मंडे आ रहे कि नहीं होता मंडे का। ओके सो इसमें चेस्ट में कितना रखेंगे थिकनेस? 1 mm। हाँ इंटरवल भी 1 mm रहेगा। छुट्टी हो आएगा। वहीं से हाँ सर यहाँ पे डेस्टिनेशन सेट कर देते हैं। जी पैक्स भी करना। पहला कंसोल में करेंगे, सेकंड गैलरीज, थर्ड जी पैक्स जगह ही नहीं है। but one we need to send it to G packs। ये ठीक है, अभी अभी बाद में उसको सेट कर लेंगे। ठीक है अभी इधर रखते हैं, विल सेट कि कौन सा रखना है। फिर यहाँ पे आगे से जब प्रोसेस कर रहा है ना सीधा चलेगा डाटा वो डाटा आ गया 20 मिनट
उसका मैक्सिमम में कितना कितना रख रहे हैं? मैक्सिमम में वो अराउंड 160 मैक्सिमम है। नाउ किसी में 120 है, किसी में ये सर 40% रिडक्शन है, 40% डोज रिडक्शन। ऑफिस में है डाउट नहीं ना मैं आती हूँ बैग लेके So we are modifying those series transfer. हाँ, ऑटो ऑटो ट्रांसफर लगा दिया। ठीक है, अभी हमारा ब्रेन हो गया, नेक हो गया, लंग्स हो गया। लंग्स में HRCT भी डाल रहे हैं, बस वो रूटीन वाले। हाँ वही हेल्थ रूटीन सीटी वही हो गया। अपने को तो सिर्फ रजिस्टर एक्सीएल भी सेट करना है या नहीं करना? हाँ ब्रेन एक्सीएल नहीं, ब्रेन एक्सियल अभी किधर करते हैं, जो ठीक। अभी एक्सियल ब्रेन कोई करता ही नहीं है, हेलिकल ही रहता है। पहले जब भी स्कैनर होते थे ना पुराने वाले, उसमें हेलिकल में रेजोल्यूशन अच्छा नहीं मिलता था, बट अभी अच्छा है। पहले फिल्टर बैक प्रोजेक्शन था, इतना अच्छा इमेज नहीं आता था, बट इसमें अभी ठीक है। नेक्स्ट है चेस्ट हो गया अभी, और क्या एक एब्डोमिनल पेल्विस। एब्डोमेन पेल्विस का तो यही हो जाएगा। एब्डोमेन पेल्विस स्पेसिफिकेशन क्या होता था उसमें? हेलिकल वाले में ना आने का रीजन? हाँ सर, हेलिकल वाले में रेजोल्यूशन स्पेसिफिकली ब्रेन में अच्छा ना आने का रीजन रहता था ऐसा है? ब्रेन में एक्सियल अगर आपको कोई ऐसा एक्सियल स्कैन जिसमें मोमेंट नहीं है, वो आपको एक्सियल स्कैन में अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर थोड़ा भी मूवमेंट हुआ तो उसमें सारे स्ट्रिक्स आ जाते हैं। एक्सियल में क्या होता है, टेबल स्टार्ट एंड स्टॉप होता है, राइट। तो जब ये स्टॉप होता है ना तो पेशेंट को जर्क होता है, तो जर्क के टाइम पे स्कैन मार दिया ना तो पूरा ये होता है। बट हेलिकल में क्या होता है, कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो उसमें पेशेंट जर्क नहीं करता है, तो इट गिव्स वेरी गुड इमेज क्वालिटी। मैंने जी मैं आपसे स्पेशलिस्ट से पूछ रहा हूँ, मुझे जैसे इन्होंने पूछा स्पेसिफिकली, तो मतलब मुझे इनकी कौन चीज़ समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले प्रीवियसली हम लोग क्या करते थे या कुछ एक सिस्टम में देखा गया है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रेन के केस में हम एक्सीएल प्रेफर करते हैं, सिर्फ ब्रेन के लिए, नॉट और बाकी जो आर्टिफैक्ट होता था, सिर्फ ब्रेन के लिए, राइट। और अगर मैं ब्रेन में हेलिकल करता हूँ तो उसमें मतलब मेरा आर्टिफैक्ट्स आते थे पहले, क्योंकि जो जो स्कल है और जो ब्रेन है जहाँ पे इंटरसेक्शन है दो। अभी विल क्रिएट द एब्डोमेन पेल्विस। ये जीरो हो गया, एंड दिस वन इज द स्काउट इमेज। ओके, स्काउट में 10 ही रख दिया। दिस वन इज CT, 1 second। Oh, 1.25 mm, 1.63। okay, and MA में 0T, ठीक है। ओके, 80 to 180, 30% डोज रिडक्शन, ठीक है। कुछ किसी बात पे लगा हुआ
आज भी तो पड़ी है ना मेरे को थोड़ा तो शायद में ऑफिस में उसको बुरा बना के बैठा हुआ आई फेल्ट सो हाँ मैं अब मेरा कोई इस चीज़ में सिर्फ कॉपी फोटो लेने के जाने का फोटो लेना ऐप में मेंशन इसमें इसके पहले जो बनाया ना ये वाला we can copy the same. इसमें ये एडिट नहीं किया हमने इधर रिकॉन में ये IQ एनहांस ये एक्टिवेट करने का ये 50% कर दो अभी ठीक इसी इसमें भी वो है ना एडिट देखना है क्या उसमें कुछ नहीं ना इसमें रिकॉन में जाके IQ एनहांस ये कितना रखा है इसको एक बार 5 MIN से कुछ वो दिख रहा है नहीं दिख रहा ना उसको डाटा भेजना है बड़ी चल रही किसी MIN टेक्नीशियन को वो भिजवा सकते हैं कुछ करवा सकते हैं Just click here. किसका Stop.